First of all, how you need to understand and do a group discussion. First thing is, जब भी group discussion करना है, language is not a bar. English बोलो, हिंदी बोलो, both the languages. You are comfortable in किसी भी language में you can start, you can initiate, right? Second thing is, whenever you are starting the group discussion, suppose मैंने आपको topic दिया है, कोई भी topic है, आपने first of all बोलना है, good morning everyone. The topic of today's discussion is जो भी topic है discussion का. Then you have to say in a very simple form, what is the meaning of that topic? उस टॉपिक का मतलब क्या है? इम्पैक्ट की बात हो रही है, एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, कोई रिलेशन की बात हो रही है, कोई करंट अफेयर की बात हो रही है, उसको ऐसे स्टार्ट करो. दिस इज अ सोशल लेवल व्हिच इज देयर इन द सोसाइटी. दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक व्हिच इज देयर इन द सोसाइटी. दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी नीड टू हैव अ डीप थॉट ऑन दिस. मतलब अकॉर्डिंग टू द टॉपिक यू हैव टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. उसकी स्टार्टिंग लाइन दी, उसके बाद मीनिंग एक्सप्लेन किया टॉपिक का, उसके बाद व्हाट यू हैव टू से इज like where you are, you can say give your viewpoint. आप उस टॉपिक के फेवर में हो, आप उस टॉपिक के अगेंस्ट, and then you say I open the house for the discussion. That is a kind of an introduction you give. If you forget even one thing कि मैंने मीनिंग नहीं बताया, मैं यहाँ में अपना व्यू पॉइंट नहीं रख रहा हूँ, उससे आपकी इंट्रोडक्शन थोड़ी कम आप बोल सकते हो. It does not sound very interesting or very good. ठीक है, तो अपने पॉइंटर्स को याद रखा करो. पहले गुड मॉर्निंग, टॉपिक की इंट्रोडक्शन, देन गिव अ वेरी इंट्रो लाइन फॉर दैट टॉपिक कि वो क्या है, सोशल लेवल है, कोई कंट्रोवर्शियल इशू है. उसके बाद उस टॉपिक का मीनिंग आ जाता है वन लाइन में, एंड देन यू हैव टू गिव, यू कैन से योर व्यू पॉइंट एंड ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन. क्योंकि आपके पास चार्ज, आप उसको कहीं पे भी मोल्ड कर सकते हो. Then everyone, each one of you will start like I favor the topic, I am against that topic. जब भी first time बोलना है ना, suppose you get one time a chance to speak, because कई पैनल वाले 8 मिनट्स ले रहे हैं, कई 15 लेते हैं, कई 20, 25 एंड 35. सपोज इट इज 8 मिनट्स, तो आप लोग को बहुत कम चांस मिलेगा बोलने का. एंड मेक इट अ पॉइंट कि मैं एक बार अगर बोल पा रहा हूँ तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग बोल पाऊँ, कुछ अच्छा बोल पाऊँ, और अपना मैं प्रूव कर पाऊँ दैट यस आई एम इन द फेवर ऑफ दैट टॉपिक और आई एम अगेंस्ट दैट टॉपिक. अपना स्टार्टिंग जरूर क्लियर करा करो. बहुत लंबे लाइंस नहीं बोलते हैं, जितना लंबा बोलोगे उतना फंसते हो. ठीक है, डोंट गो फॉर वेरी, यू कैन से लार्ज पॉइंट्स, गो फॉर वेरी ब्रीफ पॉइंट्स. ब्रीफ इन द सेंस कि कोशिश करा करो साथ साथ में एग्जांपल्स की फॉर्म में. जैसे कहीं पढ़ाया जाता है तो समझ कैसे आती है, एग्जांपल्स के फॉर्म में आती है ना. तो यू ट्राई टू से इट लाइक ओके आई वांट टू ब्रिंग न्यू डायमेंशन टू दिस टॉपिक, आई वांट टू ब्रिंग फॉरवर्ड, लाइक आई वांट टू टेल एवरीवन द कॉमन एग्जांपल व्हिच इज हिटिंग. और एग्जांपल में नंबर जब भी प्रेजेंट करने हैं, सपोज कोई आपने परसेंटेज मेंशन करनी है 5.3%, ऐसे करके हमेशा उसके साथ अप्रोक्सीमेट लगाना, because you can never be sure about the percentage of, you can say government या कोई ऐसी स्कीम की बात कर रहे हो, तो उसके साथ अप्रोक्सीमेशन वगैरह वाले वर्ड्स लगाना. कभी भी किसी के नेम के साथ कोई भी कंट्रोवर्शियल एग्जांपल्स नहीं देनी है. ठीक है, अपनी तरफ से एग्जांपल्स बना लो, कोई रैंडम एग्जांपल्स हो सकती हैं जो आपको पता है, बट डू नॉट टारगेट एनी बिग पर्सनालिटीज नेम और एनी पॉलिटिशियंस या किसी कंट्रोवर्शियल में मत जाना. जेनरिक स्टेटमेंट्स देना. ठीक है, इसके सिवाय व्हेन यू आर इनटू द डिस्कशन, एवरीवन हैज डिस्कस्ड, किसी को कट करना इज ओके, बट ये भी नहीं बार बार भी मत कट करना. अगर आप लोग की 2 to 3 टाइम टर्न हो जाती है ना टॉपिक, तो इट इज ओके, यू कैन से कि हाँ मेरे बहुत अच्छे पॉइंट से मैंने बोले हैं. पर अगर ये है अननेसेसरी कट करना इज नॉट नॉट गोइंग टू बी गुड. राइट नाउ यू आल्सो लेस द नंबर, वहां पे और 20 तक का होता है पैनल. 20 नंबर इज अ गुड नंबर एंड यू जस्ट नीड अ चांस टू स्पीक. ओके, last thing which I want to tell you is attentiveness and patience. Whenever the person starts or speaks a line, उसी टाइम पे हिट करके एग्जांपल बोलना. अगर 10 मिनट बाद वो एग्जांपल बोल रहे हो, उसकी वैल्यू नहीं रह जाती, बिकॉज आई नोटिस इन द सीक्वेंस कि पहले किसने बोला, सेकंड किसने बोला, थर्ड किसने बोला. ठीक है, और वो पुराना पॉइंट उठा के कौन एग्जांपल दे. तो दैट इज योर ड्रॉबैक ओनली कि आपको अच्छा एग्जांपल आता है था, आपको याद नहीं था. और अब आपको 3 मिनट्स मिलेंगे टॉपिक के लिए, तो अपने पॉइंटर्स को, लंबे पॉइंट्स को, सिर्फ एक पॉइंट होता है लंबा, इसको फुल लेंथ लाइन में नोट कर लिया करो. बाकी के सिर्फ पॉइंट्स बनाया करो, जितने पॉइंट्स बना सकते हो. कि एक कैसे हर टॉपिक का होता है, गिव यू वेरी स्ट्रेटेजाइज. नेचर से रिलेटेड कोई है पॉइंट, गवर्नमेंट से रिलेटेड है कोई पॉइंट, यूथ से रिलेटेड है कोई पॉइंट, चिल्ड्रन से रिलेटेड है कोई पॉइंट, सोसाइटी से रिलेटेड कोई है पॉइंट, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब इसकी डायमेंशंस देख लिया करो. अगर आपके पास स्टार्टिंग में डायमेंशंस क्लियर है, यू कैन कनेक्ट. अच्छा ये डायमेंशंस है, ओल्ड एज से रिलेटेड कोई पॉइंट, एंड देन यू कैन इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और सोशल, ये होते हैं 7, 8, 10 डायमेंशंस. उसके साथ कनेक्ट करके आपके 10 पॉइंट्स ऐसे ही बन जाए जो आपको मिलते हैं. कई टॉपिक्स होते हैं ओल्ड एज से रिलेटेड नहीं है, यूथ से रिलेटेड नहीं है, एनिमल से रिलेटेड हो सकते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकते हैं, पॉलिटिकल रिलेटेड हो सकते हैं, सोशल कैसे रिलेटेड है. मतलब ये 10 डायमेंशंस नोट कर लेना एट द एंड ऑफ दिस सेशन कि किस किस से हमने हमेशा टारगेट करके पॉइंट्स बनाने होते हैं. क्लियर? And then you have to give a very generic conclusion that okay, we had a really great discussion.
And here we have discussed some of the positive and negative impacts of this topic. And in the brief, I would say is that every coin has got two sides, but we need to focus on the positive sides. Agar koi eradication wala hai, so it was a very good topic, and we being the youth were able to discuss what are the controversial topics, kya problems aa rahi hai, and how we need to eradicate it out. And we will be working on those topics as everyone has given their best of the points. And the best of the points are short points में बोल भी सकते इकट्ठे करके क्लियर हुआ सारा कि किस तरह से जीडी को स्टार्ट करना है, एंड करना है, बीच में कैसे करना है. लंबे पॉइंट्स नहीं देने हैं, मीडियम लेंथ पॉइंट्स देने हैं. बहुत अच्छे से आपको इसके एग्जांपल्स के साथ सेट इन करना है. ऑल सेट? एवरीवन इज रेडी विद द पेन एंड पेपर्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So the topic of today's group discussion, it's very interesting, and if you have seen कि आजकल changes बहुत आ रहे हैं environment. You know, there are different dimensions. कभी environment related, politics related, social related, कोई current issue चल रहा है. This is a topic which we have discussed before also, and quite if you have interested, does climate change badly affect our environment? That is a topic. Does climate change badly affect our environment? Now you have to take into consideration कि अगर तो climate change होता है तो वो किस तरह से इफेक्ट करता है. पहले तो ये देखो करता है या नहीं करता है, आपको क्वेश्चन मार्क है इसमें, राइट? यू आर इन द फेवर. तो whenever you start it out, whenever you put a point, you have to speak, yes, I think the climate is actually the changing and it is impacting, you can say, the environment. अब environment में I'm trying to give ideas. Glaciers की melting से क्या impact हो रहा है, animals को कैसे, livestock का क्या impact हो रहा है, लोगों को, वर्कमैन को कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, कोई सोसाइटी में. और भी अभी आई थिंक अगर बहुत पता है, वी बीइंग फ्रॉम पंजाब एरिया, प्री मॉनसून और मॉनसून से एग्रीकल्चर पे कैसे होता है. सो आई गिव यू ब्रीफ हिंट्स कि कहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो. द नंबर ऑफ टारगेट एरियाज मोर, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू ब्रेनस्टॉर्म. We keep it for 15 minutes so that you get a very interesting part of it. और जब भी कोई अब ऐसे ये है, does climate change badly affect our environment, इसको पहले क्वेश्चन को समझना, इंट्रोडक्शन देनी है, मीनिंग क्लियर करना है, अपना पॉजिटिव नेगेटिव साइड देनी है, फिर इसकी डायमेंशंस पे. अगर किसी ने स्टार्ट कर दिया ग्लेशियर्स मेल्टिंग एंड ऑल दैट, तो उसी टाइम पे हिट करके उसको कंटिन्यू करना, ठीक है? या किसी एग्रीकल्चर को, लाइफ स्टॉक को, किसी को एग्जांपल्स देने की कोशिश करना. फाइन. So it is 2:47 by my side. I'll start at 2:50 and we will have it for 15 minutes, right? And who is going to start with the introduction? Okay, ma'am, I will start. Yes, ma'am. I will start. Rahul is going to start, and I think conclusion can be done by Ajay. Is that fine? Okay. Okay. So go for the record. I'm going to pause it out now. You guys 3 minutes. Jot down as many dimensions as you can. Dimensions socho pehle.
Yeah, okay. So can we start now? Any doubts to anyone? Right? I think Rahul has to start. Rahul, go ahead. Good afternoon to all. My name is Rahul Rajanan and I am glad to start the discussion. The topic given to us for the group discussion is, does climate change affect environment? So I think it is badly affect the environment, and we will discuss going forward. And first of all, we have to understand what is the meaning of climate change. Actually, there is change in the climate, there is a change in the weather over a period of time, that is rainfall or temperature is changing over a period of time. There are there are various effects by which it affects the environment, agriculture, work hours in construction activities, and several economic losses. So I think this problem of climate change is considered as one of the biggest issues in the world. According to World Economic Forum, it also considered as the top 5 global risk around the world. So now I would like to invite all of us to participate in the discussion. Hello everyone. Yes, So Rahul. I according to my point of view that yes, the climate change badly affect our environment. Why? Because due to sudden increasing in the heat wave and heavy rain, currently we are facing a very high tomato prices. That is the badly effect of climate. One middle class people can't afford it. So this is due to the increasing in heat wave and the heavy rainfall. So yes, climate change affect our environment. Yes, I also agree with you guys, because there is a new term in which we are moving from era of global warming to the global boiling, in which the temperature of the earth is increasing at a very fast rate, which will further increase the melting of the glacier, which increase the flood-like situation in many part of the country. So I definitely agree with that there is a badly climate change which affect our livelihood and our lifestyle. Yes, As we know, after the industrialization, global warming is the emission of the greenhouse gases also, right? As rightly pointed out by Dheeraj. So how the greenhouse gases is affecting the global warming? This is in creating a climatic change also. So this is one of the reasons that is badly affecting the environment, and which is leading to displacement of people and also reduction in the crop cultivation. Also, the climatic change, another part of the climate change being, and also the animal life also is getting affected due to the climate change. So that is a reality. exactly. I would say the natural Obviously. disaster that is taking place, as we have seen the places like Delhi and all, because of the melting of the glacier, I can say that the sea levels are rising, because of which I think that natural disasters like flood and all are taking place nowadays. Yes, I should add one more point to this. Because of increased sea levels, the people nearer to the oceans or islands, they lost their shelter also. Yes, And one more point area near the coastal is constantly depleting because the sea level are constantly rising. As we know, after the industrialization, less than in 150 years, we rise the whole Earth temperature around 2.5, and because of that, the global warming is increasing rapidly. Obviously, the temperature of the Earth is increasing rapidly, and glacier get melt. But we can see also how the animal life get affected. As we know, the primary primary animal which lives on glacier is penguin and polar bear. We can see like after some time, like if the whole glacier get melt, then they got extinct, obviously. And also the city, the main city of our country or other any countries, generally located as a seashore, right? And as we estimated in a scientific research in 2050, and if we continue this in nearly in 15 years, they all got sunk in the water because of the global warming, and also because of the global warming. And also there is a generational problem, as we can see. As we continue this, our generation, which our head got obviously problem, and landsliding in Uttarakhand and many Mussoorie, we can see because of heavy rain, right?
So Yes, there is yes. lots of problem due to climate change on environmental also, and due to pollution and ozone layer depletion. As we know, in previous time, why government all world's government ban the chlorofluorocarbon. As we know, it's depleted the ozone layer. So we Yes. take an initiative, but yeah, there is a climate change, and there's a rapidly climate change, and which is affect the environment. That's my point. Yes, sir. There are many initiatives taken by the government, like Kyoto I Protocol want and the add one Paris more point Convention, here. which will reduce like greenhouse emission. So, like many government taking action like under the Kyoto Protocol and Paris Convention to reduce the greenhouse emission, which will help in maintaining the temperature in a controlled way. Because this rapid change in temperature is affecting our weather, like drastic monsoon, like very high temperature in summer and very low temperature in winter, which will affect our livelihood and our livelihood. I agree with Yes, I respect to should that. also Rising, add one I more want to point. add one more. I think I also want to add something. क्लाइमेट चेंज बैडली इफेक्ट पड़ रहा The है rise in the heat इफेक्ट कर wave. रहा है और क्लाइमेट Due also to the rise in the heat disturb waves, the construction activity is badly affected due to the cut of works hour of several employers. And one more thing I want to add in the climate change aspects, it also affects the weather pattern, which is difficult for the farmer to sow their crops, and ultimately which lowers the productivity. And due to the lower of the productivity, ultimately that demand is constant and the supply is depleted. Due to this, the inflation of the country is also rising. Rahul, I also want to add on you that due to these, as you said, the crop productivity and quality was decreasing. So majorly it directly impact on our health also. But as let's take the example of one pregnant woman. So it will also affect on that. The incomplete fetal growth will be there due to this climate change only. So yes, we can also think about that direction. Yes, I should add one I want to add one more point point. also. So climate change is badly Rains affecting are on not coming in the ground level. right time also. Increasing the desert and जैसा कि क्लाइमेट चेंज से हमारे एनवायरनमेंट को बैडली इफेक्ट पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे बहुत सारी जो एनिमल्स की प्रजातियां हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। अभी जैसा इंडियन गवर्नमेंट ने टाइगर्स को सेव करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया है, ऐसे ही क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है उससे स्किन डिजीजेस भी बहुत सारे फैल रही हैं। और दूसरी बात अगर ये करें, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे जो एग्रीकल्चरल डिसऑर्डरनेस हो जाती है, एग्रीकल्चर में सही से एग्रीकल्चर मतलब फसल उत्पादन की क्षमता जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि कहीं कहीं फ्लड हो रहा है तो फ्लड ज्यादा, जैसे अभी दिल्ली में देखा जा रहा है कितना फ्लड आया है, और कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं मतलब कि हीट वेव्स की वजह से भी आग लग जा रही है जो फसल को बर्बाद कर देती है, जिससे हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है। महंगाई जो हमारे कॉमन लोगों में परेशानी पैदा कर रही है। Yeah. Yes, I should add one more point. But we have to like focus on why the climate is changing, right? The main cause of climate changing is the pollution. The primary problem is we creating lots of pollution. As we know, like if we take example, like currently I'm in IIT BHU. Currently I'm living in BHU, and I can just as I can see the famous river, the Asti river, is totally got polluted by the people and obviously by the industries. So we can like focus on that also, that how the climate is actually changing because of like we creating a pollution, like so yeah, and that's why the environment is get affected by the climate change. Shubham, I want to also add on that point of pollution, that according to WHO 2020 report, top 15 city polluted, our India has 14 city in need. So what government taking nowadays step is that in 2020 तब तक हमारे पास BS4 जो इमिशन का स्टेज होता है वो चल रहा था, बट देन उसके बाद गवर्नमेंट ने डायरेक्ट BS6 पे चला गया। BS बेसिकली वो भारत स्टेज, वो एक नॉर्म्स है जो हमारे व्हीकल का पोल्यूशन कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हम ये इफेक्ट सारी इस पर मुझे ऐसा लगता है अभी भारत सरकार ने 2025 तक pollution like plastic pollution in the ocean, because that also the major concern, like plastic pollution. I think we also discussed about some point related to that also. इस पर इनिशिएटिव लिया गया, इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि 2075 तक भारत को ग्रीन
मतलब कि Energy. नेट जीरो इमिशन net zero वाली emission कंट्री तक बनाया ले जाना जाएगा। है। और जबकि हम जैसे कि IOCL ने भी ऐसा मतलब इनिशिएटिव लिया कि 2046 तक वो नेट जीरो ऑपरेशनल इमिशन करेगा। तो इस पे Yeah, we इनिशिएटिव लिए actually जा रहे हैं। work upon it, but it's not very effective because, as we know, we like yes. use ethanol blending in our petroleum, but and also we use the CO2 hydrogenation to reduce the CO2, obviously. But I think the the point is how main point is how the climate change actually happened. We can do the lots of things, but it's a very minimum to what we causing it. So we have to take a initial step or to the very ground level as a human level, actually. Not a obviously government have to do something about it, but we have to take a action on a human level as a personal level, in my opinion. I think. यस शुभम, आई Yes, वांट टू ऐड कि government will जब also गवर्नमेंट एक और give- स्टेप ले सकती है, जैसे कि हम अगर 2019 टू 21 का देखें तो जो ओजोन डिप्लेट हो चुका था वो कितना बना, क्योंकि तब कोविड था तो बेसिकली व्हीकल्स का कम हो गया था चलना, सो तब वो कम था। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि ट्रांसपोर्टेशन जो बल्क ट्रांसपोर्टेशन है वो इंक्रीज करे, हालांकि इंडिविजुअल को कम करे। तो वो एक गवर्नमेंट और हम इंडिविजुअल पे स्टेज ले सकते हैं, जिसकी I वजह से totally agree So, with Krushal Yeah, because government also for give that we the can promote a public support transport. for the electric I we have vehicles. also to want to prefer add some more more the points on public that. transport rather than Ajay is there. Ajay, go for the conclusion. Yes. Hello friends, we have discussed, we have a very healthy discussion here, and we discussed various points regarding the climate change badly affected our environment. So we have discussed about the weather cycle, sea level rising, and agriculture, and producing of the food supply, and human health also, the effect on the wildlife and on the animals, and migration of people also. So these are the major factors where the climate are badly affected our environment. Okay. Now listen, everyone. First of all, when I come to each one of you to discuss this topic, tell me what was the topic? Does climate change badly affect our environment? Environment. The question, Well, when you started Yeah. moving towards what government is doing, Sarkar ye karegi 2020 tak, was it asked, or you covered all the points that you started discussing about No. what efforts have been done by the government, or what are the plans? Did you discuss everything? The question was, does climate change badly affect your environment? So you have to discuss कि हाँ करता है तो किस किस पैटर्न में करता है, क्या एग्जांपल्स दिए, सीधा गवर्नमेंट पे आगे 2020 तक ये हो जाएगा, इस पे ये हो जाएगा, अलग ही डायमेंशन दे दिया जाता है, फिर वो बीच में अलग से डिस्टर्ब होता है। That was started wrong by Shubham. I tell you, Shubham started wrong. जिसमें उसने Yes, ma'am. implementation में it start was a So that basically is, जल्द if he is doing wrong, you guys are to be sticking on your points. तुम लोग भी नहीं गलती की तो हम सभी भी क्या करेंगे, हम भी वही डिस्कस करेंगे. That is the wrong thing that starts, and I had to stop you. It should not be topic को पहले समझो. It's not about digressing. Each time you digress, you get eliminated from the panel. You have to understand this thing. उसने start किया, वोट बाहर होगा तो साथ में तुम्हें भी बाहर लेकर जाएगा. ये चाहते हो? Last time I still remember one GD where I gave a topic, and Crucial Ji, what he did is he understood the topic entirely differently, and he gave the introduction all different, and everyone started speaking all different in that topic. The topic ही कुछ और था और सारी GD किसी और topic पे हो गई. That is what you have to understand कि मैंने अपनी एक rank, अपनी space बनानी और मैं digress ना हो जाऊँ. Clear? Yes, ma'am. Before, and Shubham, your points were too lengthy. एक पूरी statement में खत्म नहीं करना. सारी मैंने क्या क्या डिस्कशन नहीं कर दी. शुभम ने कहाँ से स्टार्ट किया, ग्लोबल वार्मिंग का, उसने लार्ज पार्ट CFCs हर चीज डिस्कस करनी शुरू कर दी. इट्स नॉट अबाउट दैट कि एक बार ही बोलना और सारा बोलते रहना उसके बाद. Then again you started with some point, then you gave it a very big pointers, and same I think was started by, I think later on by क्रुशियल का भी इम्प्लीमेंटेशन, ये सबका उधर ही चला गया था डिफरेंट साइड पे. कैसे सेव कर रहा है सरकार, क्या कर रही है, दैट्स नॉट अ टॉपिक. डाइग्रेस मत हो. अब जैसे टॉपिक पे थे, पहले तुम लोगों ने स्टार्ट किया, आई थिंक इट वाज स्टार्टेड बाय राहुल, इट वाज अ गुड इंट्रोडक्शन, नॉर्मल वन. थोड़ा सा और इसको इंप्रूव कर देना इवेंचुअली द पॉइंटर्स, बट इट वाज नाइस. क्रूशियल ने स्टार्ट किया, फिर हैवी रेन हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है, मिडिल क्लास नहीं कर पा रहे हैं, जो भी आपने चीज बोली. तो यू टारगेटेड अपॉन, यू कैन से मल्टीपल थिंग्स, प्राइसेस
बेसिकली आपने रेनफॉल पे टारगेट किया, दैट इफ द रेनफॉल, उसी पॉइंट को कैसे बोलना है, दैट वी फोकस फर्स्ट थिंग ऑन द रेनफॉल पैटर्न, कि मॉनसून पैटर्न पे, अगर मॉनसून प्री मॉनसून या बाद में आती है, क्या होता है उससे क्या है, रेन इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, जिसमें जो आपके फूड इंग्रेडिएंट है, खाने पे इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, लिंक करो फूड के साथ, वाटर के साथ, ये रिसोर्सेज हैं इन्वायरमेंट के, होते क्या है, फूड होता है, इन्वायरमेंट होता है, आपका कोई चीज आ गई, सपोज इफ आई गिव यू द पॉइंट अबाउट हीट वाला भी आपने पॉइंट कवर किया है, इस तरह से इम्पैक्ट अपने टॉपिक को, लाइन को बोलते हुए भी सोचो। धीरज का आया टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, इसको फ्लड वाली साइड पे लेकर गए, दैट वाज फाइन। पानी की बात करो, रेनफॉल से आपने वाटर के कनेक्शन में, आप बोल सकते थे व्हेन यू स्टार्टेड धीरज दैट अपार्ट फ्रॉम द रेनफॉल फैक्टर, इफ वी सी क्रूशियल, इट इज अबाउट अ डिस्कशन कि क्रूशियल अगर रेनफॉल इम्पैक्ट हो रहा है तो हीट इंक्रीज की वजह से ग्लेशियर भी बहुत बने और फ्लड का भी, एंड दैट इज व्हाट आई, दैट इज अ बिग कंसर्न फॉर अस, राइट, कि हमें पता नहीं है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब हो रहे हैं, क्योंकि फ्लड आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उड़ जाएंगे। तो ये पॉइंट कनेक्टेड था। उसके बाद आ गया आई थिंक आनंद का पॉइंट था, there it comes for the displacement of people, crop culture, life, this. इसमें आनंद, what I felt wrong in you is you were speaking it with too low confidence. बोलते हो जैसे एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी मिसिंग थी। That you could say is that highlighting towards the water level and all that, I find that there is a basic, अगर मानसून की वजह से या कोई इशू है, जैसे heat shocks की वजह से होता है, तो displacement of people होता है from one pattern to another, and many crops they are not able to survive in this heat shock, जिससे अल्टीमेटली क्या होती है, वो लोग जो है लाइफ स्टॉक भी है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाती है, लाइफ स्टॉक्स भी खत्म हो रही है, जो भी हमें चाहिए। ऑब्वियसली एनिमल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर आवर ब्रीड एंड ऑल दैट, वो भी पर्पसेस के लिए नहीं है, वो चीज मेंशन करो। पॉइंट को बोलने का तरीका देखो कि पहले क्या पॉइंट हुआ, उसको कोलैबोरेट करके बोलो कि लोगों को लगे कि मैं बहुत अटेंटिवली सुन के बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आया अंकित का पॉइंट, इट वाज स्टार्टेड विद दिल्ली एंड ऑल दैट, दैट वाज अ गुड वन, द वे यू स्टार्टेड कि दिल्ली की अगर बात करते हैं, सी लेवल की बातें करते हैं, आपने बात वही ऊपर वाले की है, सेम क्वेश्चन को सेम ही चारों लेवल पे एक तरह के चल रहे हो अभी तक, ठीक है। अभी एक टॉपिक की डिस्कशन हो रही है। राजू ने बोला पीपल फ्रॉम न्यू आइलैंड्स, राजू मुझे पॉइंट समझ नहीं आता है, कौन सा? Island, the people living near the sea areas and islands, because of increased sea level, they lost their shelters. वो सेम पॉइंट उसमें आ गया, हैबिटेट, फ्लड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, या तो इसको टारगेट करो कि देयर इज अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल, लोग अकेले आइलैंड के पास आ जाएगा, फ्लड आ गया तो कोई नहीं बचेगा उस एरिया का, ठीक है। तो वो तो आ जाता है, वो तो ऑब्वियसली ये तो चीज पता ही है, जो उसके पास रह रहे हैं, आइलैंड्स में रह रहे हैं या फिर सी के पास रह रहे हैं, उनको तो पता ही है कि वो सबसे पहले उनकी वो है, they are the ones who get the, you can say, into the risk at the larger stage, वो तो पहले ही है, वो तो चीज अगर आप नहीं भी बात करोगे ना, डिस्कस करोगे तो हमें पहले ही पता है। तो ये नहीं बोलेंगे सर, ये बोलो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दैट, उससे लॉस हो रहा है, उससे इकोनॉमी पे लॉस हो रहा है। क्यों, अगर पूरे एरिया का किसी में फ्लड आता है, कुछ आता है, कोई बात कर लेते पुराने उसकी, जैसे केदारनाथ पे कुछ ऐसे पुराने इश्यूज हो रहे थे, तो गवर्नमेंट को कितना स्पेंड करना पड़ता है उसी चीज को दोबारा बनाने के लिए। अभी कितना फ्लड आया, फ्लड की वजह से सोचो, या पानी खड़ा हुआ है, पहले क्या हो गया, बहुत ज्यादा जो घर थे, इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वो खराब हुआ, इकोनॉमी लॉस हुआ, सरकार को भी पैसा लगाना पड़ेगा। थर्ड, पानी जब बहुत ज्यादा फैलता है, डिसीजेस लेकर आता है अपने साथ। अभी देखना कुछ टाइम तक ये होता है कि ऑब्वियसली वही चीजें आपको बाहर मार्केट में मिलती है खाने के लिए, बोलते हैं ना मॉनसून में तो वैसे ही बाहर का नहीं खाना चाहिए, एंड यू गेट वेयर ऑल द फ्लाइज एंड ऑल दैट, एंड पीपल आर गेटिंग सो मेनी डिसीजेस। अभी कंजक्टिवायरस एंड ऑल दैट, यू आर एक्चुअली एबल टू लर्न इट। यहाँ कोरोना वायरस हुआ था, अभी ये आई फ्लू वाली प्रॉब्लम आ रही है, कितनी इंक्रीजिंग स्प्रेड हो रही है। दिस कुड बी लिंक्ड कि हाँ ये आईज में प्रॉब्लम या फिर ह्यूमंस को प्रॉब्लम्स दे रही है, another from one from another one, ठीक है। उसके बाद then gave by Shubh, I think शुभम ने पॉइंट दिया, शुभम it was a too lengthy point, मुझे ये नहीं समझ रहा था कि मैं मेंशन को लिखूं, और इतना मैंने बहुत स्टार्टिंग बोला था, क्रक्स पे चलो, इतना लंबा पॉइंट लेने की जरूरत ही नहीं है। यस मैम, ठीक है, अपने तो एक्चुअली मेरे पास जो 4-5 पॉइंट थे, मैंने सबको इंक्लूड कर दिया एक साथ। सभी एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, सभी का पॉइंटर मैं देख रही हूँ क्या है, एग्जांपल है, देना अपने पॉइंट ये करो। ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू दिस टॉपिक अ न्यू डायमेंशन, अपार्ट फ्रॉम वाटर लेवल, व्हाट इज इंपैक्टिंग इज फूड सप्लाई पे बात करते हैं। सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो रही है, वाटर शेड की वजह से शॉर्टेज आ रही है, शॉर्टेज की वजह से बहुत ज्यादा चीज में इवन डिसीजेस भी आ रहा है। अगर आपने वाटर को टारगेट किया तो फूड को टारगेट, डिफरेंट एरिया में टारगेट करो ना आप, ठीक है, वो चीज में प्रॉब्लम उसका भी मेंटेन इट वाज ऑल ओके। आई थिंक उसके बाद मुझे ना एस से किसका नेम है यहाँ पे, सुमित का था शायद, एग्रीकल्चर वाला पॉइंट, ड्रॉट आ रहा है, फ्लड आ रहा है, वो फिर पानी वाला पॉइंट इतना पसंद है, पानी, सभी पानी पे बातें कर रहे हैं,
भाई कोई और भी डिमेंशन है ना? स्किन डिजीजेस के बारे में बात किया था, टाइगर्स जो मतलब डिसीजेस हो गया। हाँ, ये बोलो लाइफ स्टॉक की बात करो, उस टॉपिक को हेडिंग दो ना। मैं अगर एक ही चीज बोलूंगी वाटर, बारिश बारिश बारिश, यू विल गेट बोर्ड विद मी इवेंचुअली, right? You have to move into this, the livestock you have to talk, you have to talk about agriculture part, you have to talk about crops part. जैसे ही मैं डिफरेंट बोलूंगी, लगेगा कि लाइंस डिफरेंट बोल रही है, ठीक है? उसमें आ जाता है, जैसे अभी आता है ग्लेशियर मेल्टिंग, तो उसमें आ जाता है ओशंस है, वो अपना मेन जो है वी आर गेटिंग एसिडिक, वो अपना मेन चार्म, वो चीजें लूज कर रहे हैं, जो बीच में उसकी हैबिटेट है वो लूज हो रही है, वो बातें करो ना फिर, अगर डायमेंशन देना ही चाहते हो इस टॉपिक को, ठीक है? उसके बाद स्पीशीज क्या आ जाता है, हीट की वजह से, अगर आप हीट वेव्स पे जाते हो, वाटर वेव्स पे जाते हो, ये सारा डिफरेंट है। हीट स्ट्रोक्स की वजह से बेसिक लाइफ इम्पैक्ट आती है, क्रॉप इम्पैक्ट आता है, और अगर आप देखो कि लेबर के वर्क में भी इम्पैक्ट आता है। अभी जो कोरोना वायरस वाज देयर, राइट? या फिर आप हीट स्ट्रोक की बात करो, फ्लड बात करो, जो लोग वो दिहाड़ी पे काम करते हैं, एक दिन में वर्कर्स होते हैं, व्हाट दे विल डू, हाउ दे विल अर्न देयर ब्रेड एंड बटर? नहीं कर पाएंगे ना वो, ऑब्वियसली उनका जो बोल सकते हो कि उनके सर्वाइवल रेट्स कम हो रहे हैं, दैट इज इम्पैक्टिंग जो ह्यूमन की लेबर वाले वर्क भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो अल्टीमेटली एक इकोसिस्टम को इम्पैक्ट हो रहा है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडल, और कुछ भी चीज है, घर की खराब हुई, बाहर की खराब हुई, इकोनॉमी तो जा ही रही है ना। तुम्हारी कोई भी चीज खराब हो गई, सपोज करो, है ना, घर में लीकेज ही हो गई, एग्जाम्पल फ्रॉम अ वेरी ब्रीफ, ये देना नहीं है वहां पे एग्जाम्पल, यू हैव टू रिपेयर इट गाइस, इवन फ्रंट पे भी है तो क्या आएगा, पैसा तो खर्च हो रहा है तुम लोग का, and that is getting why because of the environment changes जो हो रहे हैं। क्लियर हुआ? These are very brief examples. उसके बाद तुम लोगों ने पता नहीं, I don't know why you directly started shifting. You could discuss on examples and all that. You started discussing what government is doing for us. That is at the end, if you have covered all the points, and then one of you should come ahead. Okay, after discussing all the points, that what are the impacts, we are able to see that there are huge impacts of climate change on environment. Now I want to bring the topic to a new dimension, and that is like what government has done so far and what we being the youth can do about it. मैंने दी हेडिंग दी, फिर स्टार्ट करो ना तुम लोग, ये थोड़ी शुभम ने दे दिया तो हम लोगों को शुभम ही फॉलो करना है। नो वन इज परफेक्ट, नॉट इवन मी, नॉट इवन यू गाइस, राइट? तो उसको उस तरह से करना है कि गलती हो सकती है, उसने गलत बोल दिया तो हमने ध्यान रखना है, वी हैव टू स्कोर अ पॉइंट, ओके? और अभी ये बहुत इजी टॉपिक था, इट वाज नॉट अ टफ वन। अभी तो इस वीक आपकी टफनेस हर दिन बढ़ेगी, ठीक है? अभी जो लास्ट by the end, when I end a GP doesn't mean it has been ended. You have to keep a notebook ready of yours, maybe a 10 rupees notebook or something. रोज के अपनी जीडी का हेडिंग डाला करो और 10 पॉइंट्स लिखा करो, उसके क्या क्या बनेगा, ठीक है? पॉइंट्स को लिखो। हाँ, ये जो ओजोन डिप्लीशन है, CFCs है, ये तो एग्जांपल्स में कवर हो जाता, ठीक है? बहुत लोग लाइफ स्टॉक है जो एनिमल्स एंडेंजर्ड हो गए, वो बात कर सकते हो। आजकल स्पैरोज दिखती है तुम लोग को? No, बहुत कम। Like we have enjoyed this era. So future generations won't be able to enjoy that also. So आती चीजें दिखेंगी नहीं, which we have just read on the papers, or you can say black and white in books. ऐसे डिस्कशन करना is giving very beautiful points, and you have to change your content patterns. Clear? Yes, ma'am. एक दो डाउट्स थे कि सपोज करते हैं कोई टॉपिक हमें मिलता है तो लाइक हमें किस तरह सोचना चाहिए कि इस पे कैसे पॉइंट इकट्ठे करें। सपोज करते हैं नॉलेज है उस पॉइंट पर, बट फिर भी पॉइंट कैसे इकट्ठे करें, जैसे कि पहले हमें क्या लाइक सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए दिमाग में हमारे की लाइक अब क्या करना है। The way I told you, सबसे पहले उस चीज को कनेक्ट करो नेचर के साथ, ठीक है? कोई भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एनी टॉपिक, एजुकेशन सिस्टम या कोरोना वायरस का क्या इम्पैक्ट आया था, ठीक है? कोविड का क्या इम्पैक्ट था, आप लिंक करोगे नेचर का, नेचर से इम्पैक्ट हुआ था, लेट्स थिंक नेचर ने कोविड पे क्या इम्पैक्ट किया था। हाँ, बाहर जाना बंद हो गया था पर नेचर इंप्रूव हुआ था, पॉल्यूशन खत्म हो गया। उसके बाद मैंने देखा ओल्ड एज वालों के लिए कोई इम्पैक्ट था, ओल्ड एज की ज्यादा हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही थी, बच्चों पे कोई इम्पैक्ट था, बच्चे क्योंकि बच्चे बाहर नहीं खेलने जा सकते, यूथ पे कोई इम्पैक्ट था, हम ज्यादा क्या हो गया, आइसोलेटेड हो गए, और बहुत लोगों ने डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस, ये चीजें हमें देखी, ठीक है? एजुकेशन पे इम्पैक्ट था, हाँ एजुकेशन पे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो गया, ऑफलाइन से ऑनलाइन आ गए हम सारे एजुकेशन सिस्टम में। उसके बाद मेरा और कौन सा पॉइंट, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट था, हाँ यार इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट था, इकोनॉमी पे तो बहुत ज्यादा था, बहुत लोगों ने अपना जॉब्स लूज कर लिए एंड ऑल दैट। सोशल इम्पैक्ट था, हाँ सोशल तो बहुत ज्यादा था, हमने एक फ्रेंडलीनेस, बॉन्डिंग, इंटैक्टनेस खत्म कर दी। ये मैं रोज डिस्कस करूंगी, पॉइंटर्स हैं, हेडिंग्स होती है, कोई भी टॉपिक से
पक्का करो, बनता है नहीं बनता क्रॉस। गवर्नमेंट ने क्या किया था कोविड के टाइम, गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो इम्प्लीमेंट किया ही होगा, अगर नहीं भी पता तो कुछ पॉलिसीज बनाई वो खाना मिल सके, ये राशन की शॉप्स खुली रह सके, कोविड को है ना, ये सैनिटाइजर्स एंड ऑल दैट सबको दे रहे थे, वो फ्री कोविड इंजेक्शंस मिले थे हमें बाद में, लाइक यू कैन से प्रिवेंशन वंस, ये हमने किया डिस्कस। अब मैंने एक टॉपिक पे मैंने कोई डिस्कस नहीं किया, पर मैंने हर टॉपिक को लिंक करके आपको बता दिया कैसे करना। दिस इज अ स्मार्ट वे यू हैव टू लर्न एंड दिस इज सीरीज यू विल लर्न। और मैम जैसे ही हम नए डायमेंशन को ऐड कर रहे हैं तो वी हैव टू पॉइंट इट आउट फर्स्ट, मैं ऐसे कर रहा हूँ, अब इस पे हम बात कर सकते हैं। Let's pick a new dimension, guys. Now, okay, apart from water, apart from education system, crime की बात कर लो, crime बढ़ गया था भाई, ठीक है? तो इस तरह से I'll give you multiple ideas how to do a group discussion. कैसे है first thing, कैसे लिंक करना है, कैसे कैसे पॉइंट को चेंज करना है, that is what you have to do. Yeah? Yes, ma'am. Take it out to anyone. ओके तो आप अपने पॉइंट्स को जॉट कर लो अपनी कॉपीज पे, जो भी हमने डिस्कशंस की है, वीकली डिस्कशन देखा करो, दो कौन सी हो रही है और कितने कितने पॉइंट्स पर बना पा रहा हुआ है, दैट वुड हेल्प यू एक्चुअली टू इवॉल्व। ओके गाइस, सो ठीक है, टुमारो, बाय।